Hello, hi, good evening. Welcome to AccuCheck Wealthy. We are back this time with a new set of information and new tips for all our lovely AccuCheck Wealthy family. Hello, Amol. Good evening. How are you? Any special plans for Christmas, New Year? We would love to know. Hello, Mr. Chakravarti. Good evening. Glad to have you as a part of our AccuCheck Wealthy family. Thank you so much for joining today's session. Hello, Mr. Ajay Kumar. Good evening. Thank you for joining today's session. I hope you're doing well. All right. Let's wait for our entire AccuCheck Wealthy family and then we'll start with today's session. Hello, hi, good evening. Thank you for joining today's session. Let's wait for our entire AccuCheck Wealthy family and then we'll start with today's discussion. Meanwhile, a Merry Christmas and a Happy New Year to all of you. Absolutely. Traveling with diabetes is a special topic. Many of our AccuCheck Wealthy users actually have requested for this topic because in the first week of January or in the last week of December, most of them travel to their holiday destinations, to their family spots, or they have some friends get togethers or some family get togethers. So, some of you from this session today have selected a topic which we are going to discuss in brief today, traveling with diabetes management. All right, let's wait for our entire AccuCheck Wealthy family and then we'll start with today's session. Mr. Chandrasekhar, good evening. Thank you for joining today's session. Glad to have you as a part of our AccuCheck Wealthy family. Hello. All right, let's wait for everyone to join and then we'll start. Hello Deepa ji, good evening. कैसे हैं आप? I hope you're doing well. Let's discuss about traveling and diabetes management in today's journey. All right, great. Thank you so much for joining today's session. Shambulal ji, कैसे हैं आप? Good evening. I hope you're doing well. Please take care of your health. Hello, Mr. Ashok. Glad to have you. Good evening. How are you? Thank you so much for joining today's session. Hello, Nayan. Good evening. Thank you for joining. Let's wait for few of our AccuCheck Wealthy members and then we'll start with today's discussion. Meanwhile, if any one of you has any questions relating to today's topic or in general about diabetes management, please drop in your questions in the Q&A box and I'll be more than happy to help you out. Meanwhile, I hope your health coaches are sharing some great Christmas and New Year recipes with you, some hacks with you, some kind of information, some kind of traveling tips, some kind of eating suggestions. All of you, a Merry Christmas and wish you a Happy New Year onwards and upwards. Looking forward to more webinar sessions, lot of information exchange, and a lot of knowledge sharing throughout the coming year. All right, I can see some great, amazing messages. Thank you so much. I am as happy as all of you to connect with you, each one of you specifically, every week. Meanwhile, let's greet our users. Hello, Sanjeev ji. Good evening. Thank you for joining today's session. Hello, Mr. Virendra. Good evening. I hope you're doing well, taking care of your health.
Any special plans for Christmas? Please do drop in the chat box. Hello, Raz. Good evening. Thank you for joining today's session. I see you're a new joinee in today's webinar, and I would be happy to help you and take you through a lot of information. Hello, Pramod ji. Good evening. Glad to have you. Welcome back. I have seen you after some sessions today. All right, so let's jump directly to today's topic. Quickly in the chat box, I would love to know आप लोगों में से कितने लोगों को आज के टॉपिक का नाम पता है, आज का टॉपिक क्या है? Can any one of you in the chat box tell me what is today's topic of discussion? What are we going to discuss? Can you all tell me? I'm waiting in the chat box to know your messages. Hello, hi, good evening. Please share what do you think is today's topic. I am not going to start unless I get few responses, because I think it is essential that we do a little bit of our homework and come in this session. आपका आज का टॉपिक क्या है ये आप चैट बॉक्स में या Q&A बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं. For our Hindi users, I just thought of giving you a Hindi update. Yes, absolutely right. I can see few messages in the chat box. And today's topic is about diabetes management while traveling. I think many of us are on a business trip or usually stay far away from family for work related concerns, or we travel very frequently because many of you have a job which is related to maybe marketing, sales, auditing, traveling. So, in all of these conditions, there is one thing which needs to be managed, that is your diabetes management with traveling. So, before I start today's discussion, I want to know what comes to your mind as the first thing when we say about traveling and diabetes management. I would love to know from each one of you, when I first say the word traveling with diabetes management, what is the first word which comes to your mind? Drop in the chat box. What do you think when you listen to traveling with diabetes management? Meanwhile, allow me a minute to share my screen. Okay, great. I can see few responses in the chat box. Okay, let's start with today's discussion. Today's topic of discussion is diabetes management and its adherence while traveling. Don't let good diabetes management go on vacation just because you did. I think many of you face this concern, okay, that whenever I am doing any kind of family trip, business trip, work trip, anything related to travel, I am not able to follow a diet. I'm not able to exercise. I'm not able to maintain a routine. मेरे टाइमिंग्स आगे पीछे हो जाते हैं. मुझे क्या खाना है होटल्स में, बाहर स्ट्रीट्स पे समझ में नहीं आता. So that what exactly happens. We actually don't know what needs to be done in such a scenario. Now let me tell you that how to handle travel with diabetes management. Let's move ahead. Managing diabetes while traveling is essential and important. Traveling to new places gets you out of your routine. That's a big part of the fun. But delayed meals, having unfamiliar food, being more active than usual, and being in different time zones can all disrupt your diabetes management. It is essential to know this. Okay. Traveling with diabetes. Plan ahead for more fun and fewer worries. What does this exactly mean? अभी आप लोगों को ये पता है कि मैं ये पर्टिकुलर रिलेटिव के घर जा रहा हूँ, या मैं ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट मेरे आसपास है जो होटल में मैं रहने वाला हूँ,
और जो होटल में मेरा स्टे है वहां पर मुझे बेसिकली कौन कौन सा खाना अवेलेबल है. आई थिंक टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ गूगल everything is visible as a prerequisite, as a pre-read for all of us, correct? So it is important to know that whatever may be the condition, it is essential to have a pre-planned journey. अगर आप रैंडमली जाओगे तो कभी भी आपका कोई भी इश्यूज सॉल्व नहीं होगा, कोई भी रूटीन सेट नहीं होगा. So planning, the first thing I'll suggest to each one of you who's planning to travel from tomorrow till the end of Jan or towards this year or beginning of the year for events, parties, weddings, receptions, any kind of get-togethers, plan your routine. Very important. Number one is planning. Let's move ahead. Before leaving for vacation, very important, visit your doctor. हमेशा हमको ये लगता है कि अभी मुझे टाइम नहीं है, अभी मेरे पास ज्यादा काम है, मुझे अभी डॉक्टर को दिखाने का रूटीन का जरूरत नहीं है. दैट्स रॉन्ग. Even if your HbA1c is under control, even if your blood sugar is under control, even if your medications are the same, whenever you are traveling, national travel hai, international travel hai, business travel hai, wedding occasion hai, any occasion, visiting your doctor at least 1 week before is essential. Understand this. Go to your doctor, टेक अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन. आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं विच इज मोर देन 3 hours ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, you should carry your prescription. Very important. Whenever you're going for a wedding or your party, I always suggest have a pre-meal. Just give me 1 minute. Let me have a glass of water, please. Sorry for the inconvenience caused. Yes, so I was on having meeting your doctor, having your prescription with you whenever you're traveling more than 3 hours of distance. Number one. Number two, whenever you're going for a wedding, any kind of party, any kind of celebration, get togethers, have a snack before and then go and have the food which is available there. Please understand. All right. Next important thing for all of us is that whenever we are doing a flight travel, very important, flight में कौन कौन सी चीजें जरूरी है, we'll discuss about this. Let us go through this information first. I'm so sorry, just bad throat issues. Visit your doctor, discuss your travel plans with your doctor and take a medical exam to know your sugar levels. If you need immunization, plan it at least a month before traveling since some shots may affect the blood sugar levels. Very important. I think there are some things which are essential, okay, when you are specifically traveling on a longer distance. Okay, please understand whenever you're traveling overseas, it is important आपके पास सारे वैक्सीनेशन सारे डोसेस अवेलेबल है, सो प्लीज वो इंश्योर कीजिए. नंबर टू, व्हेन यू आर एक्चुअली टेकिंग द डोसेस इट मे और मे नॉट अफेक्ट योर ब्लड शुगर लेवल्स, so it is essential to know and to check that blood sugar levels are in control and ensure that you take any kind of vaccine dosage 48 hours before in case it is related to any kind of syringe or any kind of basically injectables. Carry a doctor's letters and prescription. We discussed this. Label all items. I think
वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब चेक इन करते हो या आप जब कोई भी फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट बी हैविंग टैबलेट्स स्प्रेड ओवर। आपके पास जो पर्ची है, प्रिस्क्रिप्शन, वो होना चाहिए। नंबर टू, आपके पास अगर मेडिसिन का बॉक्स है या मेडिसिन का कवर है, रैप है, दैट विल हेल्प इवन फॉर द फैसिलिटीज, एयरपोर्ट, बस स्टैंड्स, to identify that what medications are you taking and does it match with your prescription. आप जब भी कोई भी टैबलेट्स लेते हो, any authority will just check one thing: does the name match with the name mentioned in the prescription? If that matches, they'll give you a go ahead, and the hassle or the time which is taken for this particular activity will be reduced. Get travel insurance. Get a travel medical insurance that covers for acute onset of pre-existing conditions. Know your destination. As we discussed, be informed of available local medical facilities before arriving at your destination. Keep information handy. Okay, keep your doctor's contact information and names of medications handy at all times. Have medical identification. Carry a medical ID that indicates you have diabetes. India में ये इतना ज्यादा नहीं देखा जाता, but I can tell you for sure that in case if you are on any kind of special help, व्हेन आई से स्पेशल हेल्प, व्हाट डू आई मीन, आप कोई इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, या आप हार्ट रिलेटेड कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, या किसी भी तरह का आप कोई इंजेक्टेबल ले रहे हैं जो डोज मिस नहीं होना चाहिए, ऐसे टाइम पे आपको उसका एक मेंशन और एक डॉक्टर्स लेटर जरूरी है। All right, let's move ahead. Increase your medical supplies. I think ये बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली इंडियन हमारे सारे यूजर्स के लिए। हम जब भी रिमोट एरियाज में जाते हैं, एग्जाम्पल हम हमारे गांव जाते हैं या हम छोटे टाउन्स में जाते हैं, वहां पे सारे मेडिकल शॉप्स में सारी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती, तो हम ये हमारे सारे पेशेंट्स को बोलते हैं, द नंबर ऑफ डेज यू आर गोइंग प्लस 1 वीक का स्टॉक हमेशा हमको लेके जाना है। Always remember, if you are traveling for 30 days, you should have information or your prescription or your medicines that are worth of minimum of 45 days. Please keep this in mind. This is really essential, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ मिसप्लेस हो गया या कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन is not found. That should not be the case and you're missing the dosage. Okay, so please remember and ensure that you are taking all your medications on time. You have stocked your medications of minimum of travel time plus 1 week, okay, with you. Let's move on. ड्यूरिंग द जर्नी, वेरी इंपॉर्टेंट, हम सारे डायबिटिक लोग हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम पेट भर के या एटलीस्ट हाफ फिल स्टमक में हम ट्रैवल करें। ओके, कहीं भी हमको खाली पेट नहीं जाना है, कहीं भी हमको विदाउट ईटिंग एनीथिंग, एम्प्टी स्टमक कहीं भी ट्रैवल नहीं करना है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर हाउ मच टाइम, हाउ मच ड्यूरेशन will it take for us to reach our destination. कभी आपकी ट्रेन डिले हो गई, कभी आपकी बस मिस हो गई, कभी आपकी फ्लाइट का देयर इज अ डिले इन कमिंग और डिपार्चर, ये सारे समय पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि you don't have it. Then there are cafes outside, there are healthy options, we'll discuss about that. But the first option to do and the very important thing to do is, do not leave home on empty stomach when you're traveling. It could be a bus travel, train travel, flight travel, driving, yourself driving, or somebody from your family is driving. In all these scenarios, we are not going to skip any kind of meal. All right, let's move on.
order a special meal, request a special meal. I think this usually is seen on flights. जब आप फ्लाइट बुक करते हैं तो आपको प्री मील बुक करना पड़ता है. What do I mean by pre meal is that before boarding the flight, when you check in through your net or your systems or your phones, you usually select the type of meal. तो वहां पे आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. लो शुगर, नो शुगर, ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. प्राइस इज द सेम. लेट मी टेल यू, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने हैं. बस आपको उनको 48 और 72 आवर्स पहले आपको उनको नोटिफाई करना पड़ता है दैट आई हैव दिस स्पेसिफिक मील विच आई नीड टू परचेज. ऑल राइट, बी ओपन अबाउट योर डायबिटीज. आई डोंट थिंक, और हम ये हमारे सारे यूजर्स को बोलते हैं, डायबिटीज इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अनलेस इट गोज टू अ सीवियर एक्सटेंट. प्लीज ये समझिए, जरूर ये बहुत जरूरी है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, लेकिन वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आपको छुपाना पड़े या जिसके वजह से यू विल फील शाय और you will feel a little low. So don't be shy. Let the flight attendants, crew, and people around you know, so that in case of emergency, they know that they need to call a doctor. They need to actually have somebody who has understanding of diabetes management. All right. Yes, let's move on. During the journey, carry some glucose tablets. I think I tell this to all my patients. When you are traveling, instead of glucose tablets, हम suggest करते हैं sugar sachets. So अगर आप कॉफी शॉप्स में या कैफेज में जाते हो तो वहां पे छोटे छोटे शुगर के क्यूब्स या शुगर सैशेज अवेलेबल होते हैं. आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर ट्रैवलिंग, ऑलवेज हैव 5 sugar sachets with you. One sachet contains 5 grams. मतलब एक sachet में 5 ग्राम शुगर होती है. ऐसे आपको 5 sachets को कैरी करना है, which is about 25 grams. खाना नहीं है शुगर, लेकिन इमरजेंसी में कभी बहुत लंबा गैप हो गया या आपको चक्कर महसूस होने लगी या थोड़ा सा हाथ पांव आपके कांप रहे हैं, what this indicates that your sugar has gone low. उस समय पे आपको इमीडिएटली एक सैशे आप खा सकते हैं. Check your sugar level. Sitting for a long duration without any activity may increase your blood glucose. Check your blood glucose frequently while traveling and also after you land. Jet lag can sometimes make it difficult to get the right sugar level readings. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता है अभी, लाइक वी नो how to actually do this, right? How to अंडरस्टैंड दिस कि कहीं पे भी अगर शुगर बढ़ गई है तो किस वजह से बढ़ गई. वी अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कहीं पर भी हमको ये याद रखना है कि कोई भी चीजें अगर हम खा रहे हैं तो उसको नेक्स्ट मील में कवर अप करना है. एग्जाम्पल, आपको पता है फ्लाइट्स में चॉकलेट्स दिए जाते हैं. आप नेशनल ट्रैवल करो, इंटरनेशनल करो, chocolates are usually served in flights. Okay, if you are tempted to have those chocolates, I will suggest बिल्कुल 1 से 2 पीस जरूर खाइए, no problem at all. But in case if you are having more than that, या आप कोई वेडिंग में गए हैं, अभी न्यू ईयर है, क्रिसमस है, तो इसके पार्टीज में अगर आप गए हैं तो कहीं पर भी आपको ये नहीं करना है कि पार्टी में गए, पूरा भरपेट खाना खाया, मिठाई भी खाया, आइसक्रीम भी खाया. प्लीज डोंट डू दैट. दैट विल शूट अप योर शुगर. और इतने दिन से जो आपने मेहनत की है वो मेहनत आप खुद ही कम कर रहे हैं. तो प्लीज याद रखिए कि कहीं पर भी अगर ऐसा इश्यू होता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है, 1 सर्विंग एट ए टाइम. ये याद रखना है, कम क्वांटिटी में लेना है. सब लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको कि मत खाइए, सब खाइए, लेकिन क्वांटिटी को हमेशा मैनेजेबल रखना है. Move around. Moving around and stretching while traveling helps your blood circulate and reduces the risk of blood
क्लॉट्स बहुत जरूरी है। मैं हमारे जो सारे वर्किंग क्लास के पेशेंट्स है या वर्किंग क्लास के जो हमारे ऐप के यूजर्स हैं, मैं उन सभी को हमारे टीम के द्वारा यही बताती हूँ, एवरी 2 आवर्स में आपको जगह से उठना है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए घर के घर में वॉक कीजिए, किचन टू हॉल, हॉल टू किचन, ऐसे 10 राउंड मारिए, वापस आके अपने काम में बैठ जाइए। यू कैन डू दैट। इफ यू आर इन ऑफिस, move out of your desk, go to the washroom, go to the conference room, go to the pantry, go to a nearby place for 2 rounds, come back, sit and again start your work. I think this will hardly take 10 to 20 seconds of your time, लेकिन इसका इफेक्ट आपके बॉडी पे इतना अच्छा है। कंटिन्यूअसली 8 घंटे के लिए, क्योंकि ऑफिस 8 से 10 घंटे के टाइम में चलते हैं, तो कभी भी कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली 8 से 10 घंटे हमें एक जगह पे बैठना नहीं है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। All right, let's move ahead. Healthy tips to keep in mind. Consider time zones. Adjust your watch to your home country's time zone so that you don't get confused while traveling. ऐसे बहुत बार होता है, हमारे पास काफी सारे दुबई के पेशेंट्स हैं, तो उनका इंडियन टाइम और दुबई टाइम में देयर इज अ लिटिल मिसमैच ऑफ 2 to 2.5 hours. Okay, so what needs to be taken care of is that कहीं पर भी अगर आप दूसरे टाइम जोन में जा रहे हैं, आपका मेडिसिन डोज, आपका खाने का रूटीन मिस नहीं होना चाहिए। सेम रूटीन उनके यहाँ पे आपको फॉलो करना है। जैसे आप यहाँ पे इंडियन टाइम में 1 to 2 PM के बीच में लंच लेते हैं, कोई भी कंट्री में आप जा रहे हैं, वहां पे भी आप 1 to 2 PM के बीच में ही लंच लें। All right, let's move ahead. Plan activities according to your medical condition. Go easy after long flights. Plan your activities, मतलब तुरंत आप फ्लाइट से आके घर आके आप डायरेक्टली एक रिगरस रूटीन, तुरंत नेक्स्ट डे से एक रिगरस रूटीन मत शुरू कीजिए। आपको बेसिकली गैप लेना बहुत जरूरी है। एक दिन हल्का सा वॉक कीजिए, थोड़ा घर के काम कीजिए, थोड़ा क्लीनलीनेस में हाथ बटाइए। ये सारे चीजों से क्या होगा, योर बॉडी विल गेट अक्लेमेटाइज टू हैविंग अ नॉर्मल रूटीन। बॉडी को भी एक समझ आना जरूरी है कि यस, नाउ आई एम बैक, नाउ आई विल हैव अ नॉर्मल रूटीन एंड आई विल स्टार्ट माय एक्टिविटीज। The next is watch out for what you eat or drink. Very important. I think ये बात हम बार बार आपको बताते हैं। फ्रेंड्स मिले, रिलेटिव्स ने बहुत ज्यादा फोर्स किया, खा लो खा लो खा लो, तो मैंने खा लिया। फ्रेंड्स थे तो मैं अल्कोहल को मना नहीं कर पाया। ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस होते हैं। वी नेवर टेल यू डोंट टेक, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ये समझिए। हम कभी आपको ये नहीं कहते कि मत लीजिए, हम आपको ये कहते कि ले रहे हैं तो कंट्रोल्ड क्वांटिटी। Even if you want to take alcohol, we do not say no. We understand it's Christmas season, celebration time, New Year, lot of friends, family, cousins have their get-togethers. Please enjoy your time with your special ones, but please do not overdo it. कोई भी चीज आप ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा समय करते हैं, that will be a hazard to your body. I'll give you a few examples. Instead of having hard alcohol or hard alcoholic drinks like whiskey, rum or scotch, you can go for easy options, simple options like red wine, white wine, sugar free wine. You can try these options. They are easily available in all the markets. Okay, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग हार्ड ड्रिंक्स कंप्लीटली, आप एज अ सब सेक्शन वाइन को उसमें ले सकते हैं। अप टू 100 to 150 ml ऑफ वाइन विथ फूड इज अ गुड आइडिया। ऑलराइट, एंड आई सजेस्ट अगर ये डिनर में ली जा रही है तो इसके साथ आप जो ग्रिल्ड स्टार्टर्स हैं वो लीजिए। दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ग्रिल्ड स्टार्टर्स में ज्यादा ऑयल भी नहीं होता, नंबर वन, दे आर ग्रिल्ड, सो थोड़ा बहुत बटर उसमें हो सकता है, एंड दे आर इन दी सिंपल इजी रॉ फॉर्म, जैसे चिकन ग्रिल्ड, फिश ग्रिल्ड, पनीर ग्रिल्ड, मशरूम ग्रिल्ड, वेजीज ग्रिल्ड, बेबी कॉर्न ग्रिल्ड,
potatoes grilled, all of these items can be taken, but तभी हमको डिनर स्किप कर देना है, डिनर नहीं लेना है. If you're having a glass of wine or a glass of alcohol with starters, that is a very good idea compared to having a full-fledged roti, sabzi, curry, and all the entire meal plate. All right. Similarly, it's dessert season. I think most of us love chocolates, ice creams, pastries, any kind of plum cakes, or all of these yummy cream based, sugar based desserts. वो समय हमको क्या करना है, कहीं पे भी हमको ओवरडू नहीं करना है. अगर एक सर्विंग रखी है, जैसे एक पीस आपको लेना है, एब्सोल्युटली टेक इट, रिलिश इट, एंजॉय इट, डोंट ओवरडू इट. अगर आप एक के बाद एक 4 पीस खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा ही, HbA1c बढ़ेगा ही, डेफिनेटली होगा. नेक्स्ट थिंग, डू नॉट स्किप योर एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. आप ट्रैवल में हैं, आप जर्नी में हैं, आप गांव में हैं, आप किसी के शादी में जाने वाले हैं, आप फ्रेंड्स को मिल, एक नॉर्मल वॉक कहीं पे भी है, आपको कोई चलने से मना नहीं करेगा. आसपास थोड़ा सा टहल सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, बेसिक चीज है ये. कहीं पे भी आपको नियर बाय सोसाइटी, ग्राउंड, विलेज गार्डन एरिया कहीं पे भी अवेलेबल होता है. even in the flights, between two flights there are airport walks, you can walk on the airport, just go through the shops, go through a lot of visitories available there. That will be a great thing to actually check in. All right, let's move ahead. Never go barefoot. Carry comfortable shoes. Monitor your feet for any blisters, cuts or swellings. अगर आप लोगों को पता है तो let me reiterate it for all of you. कभी भी अगर bleeding होता है तो for a diabetic person it takes a longer time for blood to stop or blood clot to happen because of the medications, the thinners, the tablets, the formins which you are taking. So please understand this. इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आपके पैर में कोई चोट ना आए, कहीं पे भी कोई ब्लिस्टर्स, ब्लीडिंग, ऐसी कोई भी परेशानी आपको ना हो. सो फुट केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. Quiz time. Yes, we have discussed a lot of information. There will be a poll which will be seen on your screen. I would love to know, is it necessary to visit doctor and discuss about the vacation? Yes, no. Select a response on your screen. I am waiting for your results. Let's see how many of you actually answer this correct. The question is on your screen. You must have received a poll. It is necessary to visit a doctor and discuss about your vacation. Yes? No? Select an option and I'll give you an answer shortly. All right. Let's see the result of the poll. Great. Lovely audience today. Everybody is saying that yes, it is essential to visit the doctor. Great job. Well done. You are absolutely right. It is important to visit your doctor. Let's move ahead. इफ यू इंजेक्ट इंसुलिन और अदर इंजेक्टेबल थेरेपी, बहुत जरूरी है. हमारे काफी सारे यूजर्स हैं जो काफी लंबे समय से डायबिटिक है और उनको इंसुलिन लेना पड़ता है टू कंट्रोल ब्लड शुगर्स. ऐसे लोगों के लिए कौन सी चीजें हैं जो उनको फॉलो करनी है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. इफ यू इंजेक्ट इंसुलिन, प्लेस इट इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग with any needles or syringes. Okay, you are carrying in your hand luggage and show it to airport security staff. Keep your repeat prescription or letter
from your diabetologist or GP available in case you need to authenticate why you're carrying these items. Okay, carry insulin and injectable therapy बहुत जरूरी है ये समझना. Okay, carry insulin and injectable therapy in your hand luggage as they may get frozen in the hold of the plane, which causes the medication to be ineffective. If you are traveling with someone else, जैसे husband, friends, family members, share your medication and equipment with them in case your hand luggage is lost or stolen. Very important. अगर आपका luggage lost है, stolen है, बहुत जरूरी है ये समझना कि आपको ये इंश्योर करना है कि आप एक यू नो किसी को वो भेज के रखें ताकि इन केस इफ इट इज लॉस्ट और यू गॉड फॉरबिड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ क्रिटिकल सिचुएशंस, आपका वो जो पर्सन है दैट पर्सन कैन हेल्प यू. ऑल राइट. if you are taking treatment that can cause hypos, I think हमारे यहाँ अभी सेशन में 90% of you people are on diabetic medications. आप सभी लोग डायबिटीज के टैबलेट्स लेते हैं. तो ये टैबलेट्स को किस तरह से, इसके लिए क्या रखना अपने पास जरूरी है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे. इफ यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट दैट कैन कॉज हाइपोज, carry glucose with you all the time. You can take glucose tablet jelly babies through customs as long as they are in the original packing. Carry starchy snacks too, like biscuits or any kind of flakes, cornflakes, wheat flakes, etc. If you are traveling alone, consider informing the cabin crew or train staff that you have diabetes if you are taking a treatment that can cause hypos. Very important. ठीक है. Traveling across time zones, this is you can discuss with your doctor insulin कब और कैसे लेना है. Out for a trip, party or trek or walk, keep monitoring as you may be eating different foods and have different levels of activity, so your diabetes control may change. You may need to adjust your insulin if your blood glucose levels are much higher or lower than usual. Be aware that alcohol can increase your risk of hypos if you drink and take insulin or certain diabetes tablets. Alcohol and increased physical activity like dancing, drinking, playing some kind of games are particularly risk for hypos. Always wear swim shoes or sandals even when swimming in the sea. Cuts and open areas on feet can quickly become infected and cause high blood glucose levels. Walking barefoot on hot sand or tiles can also cause blisters. Be aware that insulin may be absorbed more quickly in hot weather. Remember to inspect your feet daily. People who have nerve damage to their feet may not be aware of any injury. Okay, very important. ये सारे पॉइंट्स हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, planning will save you from increasing your blood sugars. याद रखिए. All right, let's move on. If you become unwell, your blood glucose levels are likely to rise. Monitor your glucose at least 4 hours. Okay. Rest and drink at least 100 ml of sugar free fluids every hour. मतलब हर एक घंटे में एक ग्लास पानी पीना है. If you are unavailable or unable to eat meals, replace these with easily digested foods. ठीक है. If you take insulin, you will need to increase your doses if your blood sugar levels are higher. ये specifically हमारे उन users के लिए है जिनको type 1 diabetes का problem है. In case if you or your spouse or somebody who you are traveling with has type 1 type of diabetes, please ensure you carry extra insulin and some food with you. All right, let's move ahead. Dehydration.
आई थिंक ट्रैवलिंग के टाइम पे ये बहुत इशू होता है कि बॉडी यूजुअली डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इन केस ही, बिकॉज नॉर्मली इन इंडिया बसेस में वॉशरूम का फैसिलिटी होना अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट on stations or on train travel, long train travels, sleeper train travels, or in your पर्सनल व्हीकल, आज सगे आजकल सब जगहों पे मॉल्स अवेलेबल है। Excuse me. So the best option is going to a nearby mall whenever your bus is halted, but ensure करना कि आप अच्छे से खुद को हाइड्रेट करें। काफी सारे लोग ये करते हैं कि क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, आई वोंट हैव वाटर, या मैं कम एक ही ग्लास खाने के बाद जो पानी है मैं उतना ही पीऊंगा या पीऊंगी, और उसी पे मैं पूरा मेरा 10 घंटे का 12 घंटे का जो गांव का ट्रैवल है या मेरे होम टाउन का जो ट्रैवल है वो मैं करूंगी। प्लीज अवॉइड दिस। इससे क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगी और डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। Traveling with diabetes can be done. Don't let diabetes keep you stuck at home. But if you do travel, do smart travel. Yes, and we are ready with this for the holiday season. We would love to know, in case whatever we have told you till this time, have you understood it through a quiz? What must be packed in while traveling? Number one, medications. Number two, food while traveling. Number three, medical ID. Number four, all of them. You will see a quiz on your screen. Please open that and answer the following question. Yes, I'm waiting for your responses. Take a minute full of time. All right. Waiting for your responses. Take a minute of time, no problem. All right, let's see the poll results. Great. I am very happy to see 90%, 90 to 95% of our audiences today say that we should have all of them. Okay. So, yes, you are right. It is essential to carry all with you. You need to carry medications, food, and your medical ID. And for your personal plan, we are here. I'm very happy and glad to tell you we are now a family of 1,10,000 users, and we will soon be 1,20,000 users by the time we close this year. One more important thing for all of our lovely audiences, okay, we are coming up with a new structure, new plans, and a lot of new things for the year of 2023. I would request, in the old prices, if you have not yet renewed your plans or if you have not purchased a plan, please go for it, because prices are going to get revised in the upcoming year. But for our older associated members, we are still running with the old price. So please reach out to your health coaches before the 31st of December. Try to renew your programs. All right, an experience that I am sure and I assure you, we will give you an experience that you will never say no to.
Please talk to your health coaches now and go to a next plan, upgrade your plan. We are not just a self proclaimed company, we are a real evidence based organization wherein we deal with all health conditions, and diabetes is our main forte. So we have groundbreaking results, we have real world studies which have shown incredible results. We are endorsed by Asia's largest diabetes association, recognized by ADA, American Diabetes Association, from the year 2018 as a global innovator. We have a mean reduction of 1 to 2% HbA1c and a mean weight loss of 2 to 3 kgs. Yes, you can be one of a user who has achieved this. Don't be late. Speak to our team now, and you will get any support which you need from our end. Yes, I think hyperglycemic episodes, hypoglycemia, illness, hospitalization, religious fast, celebrations, frequent travels, all of this gets covered in your plan. Speak to your health coach now. Yes, and that's all for today. I think we had a great discussion on diabetes management and travel. And believe me, I love this audience, always active and always ready to ask me questions and respond to all my quick things asked. All right, I would love to get some questions from all of you. Yes, some questions from all of you. I can see some questions already in the chat box. Let me go through them one by one. Hello, Ashok ji. Happy to see you active. So, Ashok ji is asking diabetes control during a travel, long train travel, if you're a diabetic, is highly challenging. Absolutely right. Follow 3 tips. सबसे पहली बात, ठीक है, कोई भी मील स्किप नहीं करना है. नंबर 2, खाना खा के जाइए, कुछ खा के, खाना एज इन have some amount of food and then go. Number 3, carry your tablets, extra tablets, and ensure that all your doses are going on time. If you follow this, no issues with your travel. How to take care of diet? Sanjeev ji, in flight while traveling, especially for 8 to 10 hours. Okay. So, hello Sanjeev ji, good evening. Thank you for connecting with us today. Absolutely good question. When you're traveling in a flight, I think we have discussed this in today's session, but I'll give you an overview of it. When you're traveling in flight, okay, it is essential कि आप आपका जो डाइट है वो इस तरह से मेंटेन करें. डू नॉट स्किप अ मील, नंबर 1. नंबर 2, go for the healthiest options which are available. एग्जाम्पल, व्हाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड सिलेक्ट कीजिए. एग्जाम्पल, राइस है और फ्राइड पूरी है, तो राइस सिलेक्ट कीजिए. उसी वही जो ऑप्शंस अवेलेबल है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, उसी में कौन सा एक हेल्दी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कीजिए. ओके. How to wipe out captions? Okay, this was during the session. So Raz, don't worry, we have a recording also available of this session. So in case अगर आपने कोई parts miss कर दिए हैं because of the caption issue or the internet issue which you are facing, connect with your health coach, upgrade to a premium plan, and she will share the recording of today's session with you. हेलो शंभूलाल जी, कैसी है आपकी तबीयत अभी? आई होप आप ठीक है, अभी आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में है. मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैं उनके जवाब देती हूँ. बार बार बाथरूम जाना पड़ता है नाइट में, इसीलिए नींद नहीं हो पाती है मेरी पूरी. नाइट में बार बार कम से कम 4 बार बाथरूम जाना पड़ता है, इस वजह से नींद पूरी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? ठीक है शंभूलाल जी, सबसे पहले तो घबराइए मत.
इट इज अ नॉर्मल थिंग फॉर एनी डायबिटिक पर्सन. जब भी आपकी ब्लड शुगर हाई हो जाती है, आपको उसको बॉडी को वॉश आउट करना पड़ता है, मतलब बाहर निकाल फेंकना पड़ता है, जिस वजह से उनकी जो ब्लड शुगर है बॉडी के बाहर फेंकने. कैसे बॉडी आपकी बाहर फेंकेगी? थ्रू यूरिन. इसीलिए बॉडी क्या करती है, जो एक्सेस शुगर है वो आपके बॉडी से थ्रू यूरिन बाहर फेंक देती है. इसीलिए हम आपको ये बताते हैं शुगर कंट्रोल कीजिए. द टाइम यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर शुगर, you will not face this problem. नंबर वन. नंबर टू, सोने से 1 घंटा पहले, 60 मिनट पहले पानी नहीं पीना है. प्लीज कीप दिस इन माइंड. बेड पे जाने से पहले 2 बार वॉशरूम जाना है. एक बार जब आपने मील कर लिया, आपका डिनर कर लिया है. दूसरी बार जस्ट बिफोर गोइंग टू द बेड. अगर ये 3 चीजें आप फॉलो करें, आई एम श्योर बार बार ना जाना पड़े वॉशरूम, एक आध बार जाना लग सकता है. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. Raz is asking, but when traveling by train, what can we eat or order? Okay. Okay, Raz, thank you so much for putting up your question here. Thank you for your active participation in today's session. I think when you're traveling by train, any train today in India which goes for a longer distance than 2 hours shows you a itinerary details. गूगल पे आपको अवेलेबल होंगे. आपको आ रहा है, आपके कोई बेटा बेटी फैमिली मेंबर, उनको बताइए. दे कैन टेल यू इफ यू आर अनेबल टू फाइंड इट. वहां पे 2 चीजें होती है. एक तो ऑन ट्रेन पैंट्री इज अवेलेबल. नंबर 2, स्टेशन फूड. मैं दोनों के ऑप्शंस बताती हूँ. दोनों कन्वीनियंट है. दोनों आर ऑन अ नॉर्मल एवरेज price level. Number 1. Number 2, when you are taking, go for healthy options. जैसे नाश्ते में आप लाइट इडली, पोहा, सादा डोसा ये ले सकते हैं. लंच के टाइम पे आप थाली मिलता है, वेज थाली या नॉन वेज थाली, वो ले सकते हैं. उसमें दोनों चीजें अवेलेबल होती है, रोटी एंड राइस. दोनों मत लीजिए, दोनों में से एक लीजिए. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पानी जरूर कैरी कीजिए. घर से कैरी करना है, बिस्लरी परचेज करना है, इट्स ऑन यू. बट वाटर इनटेक हैज टू बी सफिशिएंट. यू शुड नॉट गेट डिहाइड्रेटेड. नंबर 4, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, डू नॉट स्किप वॉशरूम. ट्रेन में वॉशरूम्स अवेलेबल होती है. अगर आपको वो अनहाइजीनिक लगता है या आपको ठीक नहीं लगता यूज करना, तो मार्केट में आजकल टॉयलेट सैनिटाइजर्स मिलते हैं. what happens there is you just need to spray the toilet sanitizers and then you can use the toilet. वो आप यूज कर सकते हैं. so if you follow these 4 tips, uh, I think you will have sufficient options. स्नैक्स में समोसा, वड़ा पाव, भजिया, ये सारे ऑप्शंस होते हैं. इनको नहीं सिलेक्ट करना है. यू कैन हैव सैंडविच, यू कैन हैव इडली, you can have tea with some biscuits, Mary biscuits, that all will do. Sukha bhel, you can have kurmura, you can have chana singh. All of these options are available wherever you travel by train. तो ये आप एक लॉन्ग ट्रेन पे दे सकते हैं. डिनर में सेम. इफ यू डोंट वांट टू हैव थाली, यू कैन हैव दाल खिचड़ी, यू कैन हैव नॉर्मल राइस दाल प्लेन विथ 1 वेजिटेबल, नो प्रॉब्लम. राइस नहीं खाना ऐसा नहीं है, क्वांटिटी कम रखो. दाल 2 कटोरी लो, या राइस का सर्विंग जो पूरा वो बाउल भर के आता है, टेक अवे भर के आता है, उसका हाफ क्वांटिटी लो, हाफ किसी के साथ शेयर करो. या अगर आपको लाइट खाना है, और इफ यू फेस एनी डाइजेशन इश्यूज व्हाइल ट्रैवलिंग, यू कैन हैव सिंपल फूड्स लाइक जस्ट हैव दाल खिचड़ी, और यू कैन हैव चपाती विथ some kind of palak sabzi or palak paneer or any kind of chole or any kind of such simple veg options. ठीक है. Don't opt for Chinese when you're traveling. Don't opt for spicy Kolhapuri vegetables or some, which has a lot of oil and lot of spice, lot of red chili or green chilies. उससे क्या होगा, acidity will form, क्योंकि वैसे ही हमारा water intake
कम होता है, उससे और एसिडिटी होगा अगर आप स्पाइसी फूड और ऑयली फूड खा रहे हैं, और ट्रैवल में आपको एसिडिटी होना, पेट भारी होना, ब्लोटिंग होना, ये सारे इश्यूज लग सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, योर ट्रैवल विल बी स्मूथ एंड सेफ. I can see a continuation of the question. Please tell in tablespoon. I'm so sorry, मैं इतना डिटेल में आपको डाइट प्लान नहीं दे सकती हूँ. इन अ वेबिनार सेशन आपको आपके हेल्थ कोच से बात करनी पड़ेगी. Talk to her. She will tell you what are the next steps, and she can send a customized diet plan for you if you are on a travel journey, या आप कहीं करने वाले हैं ट्रैवल, और इसके लिए आपको एक प्रीमियम प्लान में अपग्रेड करना पड़ेगा. All right. Okay. I can see some more questions. Let me check. Sanjeev ji is asking, during travels, it's not a better option to carry nuts, etc. Absolutely right. And that's the reason I tell all my users, nuts बहुत safe है. You know, मुरमुरा, अगर आपको पता है मुरमुरा आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ऑयल सीड्स, बिस्किट्स, very good. These days you get a lot of sugar free, oil free, fat free, trans fat free biscuits available in the market, वो आप ले सकते हैं. सिंपल चीज, कॉफी अवेलेबल एवरीवेयर, शुगर फ्री कॉफी, कॉफी पाउडर और मिल्क होता है उसमें, इट्स अ हेल्दी ऑप्शन. You can go for a sandwich, toast sandwich without butter and without potatoes. You can go for that, no problem at all. Sandwiches are healthy. एक तो वो grilled या cooked form में होते हैं, और उसमें सारी कच्ची या boiled की हुई सब्जियां होती है, तो that is a good option. You can, if you're traveling abroad, you can have pastas, salads, crackers, flakes, wheat flakes, corn flakes, easily available everywhere. You can have them. If you're traveling Indian national on a normal, national flight, you get all snacking options there, like idli, dosa, poha, upma, mixed vegetable pasta, sandwiches, everything is available. You can choose from that. I hope this helps. Let's go to the next question. Uh, Deepa ji. Hello, Deepa ji. Good evening. Thank you for joining today's session. Sorry, I couldn't connect with you earlier. So, Deepa ji is saying, dear, my HbA1c is 5.8. It means I have diabetes. Please answer. I would not be able to answer this. मुझे आपके सारे डिटेल्स, रिपोर्ट्स, और आपको एक डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आना पड़ेगा. आई एम सो सॉरी. I am a nutritionist and a food scientist by profession. I am not a doctor. So doctor consultation to identify कि आप diabetic हो या नहीं, ये जरूरी है. All right, let's move ahead. How to maintain calories of food every day in respect? Can we control calories without affecting to rise? Is there any way to calculate? Hello, Mr. Chakravarti, a brief detailed question. Maintaining calories of food is something why we are here for. That's the reason you have a customized plan with us. Okay. So yes, you can control calories. Okay. If you are traveling or attending functions, your health coach will give you a customized routine. आपके रूटीन के हिसाब से आपको टिप्स दिए जाएंगे. So in case if you are traveling, connect with her, talk to her, and she will guide you what needs to be done. All right. I see few more questions. Allow me a minute. Okay. So I would have loved to know your name, but I can see anonymous. I am in government field where we frequently have to join alcoholic parties. Can't skip such parties because of business deals. What do you suggest? आई हैव अ वेरी गुड सजेशन, बिकॉज मैं आपको ये भी बताती हूँ सर कि हमारे पास काफी ऐसे यूजर्स है जिनका खुद का बिजनेस है, या जो खुद एक सीनियर पोजीशन पे है, हुआ सीनियर्स ऑल्सो, तो उनके लिए ये सब मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो देर आर टू गुड ऑप्शंस. नंबर वन,
कुछ खा के फिर पार्टी में जाइए, so you don't get cravings. Number 2, if you are asked to have alcohol, limit it to one serving. one serving से ज्यादा, एक बारी से ज्यादा हमको सेकेंड सर्विंग नहीं लेना है। और उसके साथ आपको पूरा डिनर, पूरा मील नहीं लेना है, क्योंकि जैसे आपको पता है अल्कोहल ऑल्सो हैज कैलोरीज इन इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको पूरा मील मील ऐसे पूरा मील नहीं लेना है। आपको क्या करना है उस टाइम पे, स्टार्टर्स लेने हैं। ऐसे स्टार्टर्स लीजिए जो ग्रिल्ड फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन है तो ग्रिल्ड पनीर, बॉइल्ड स्प्राउट्स, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, पनीर टिक्कास, ये सारी चीजें ले सकते हैं। इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, ग्रिल्ड फिश, चिकन, पीसेस ऑफ any kind of dried fish, roasted nuts in that, all of these combinations can be done. थोड़ा बहुत बटर उसमें ग्रिलिंग में जाता है, दैट इज ओके, बट डीप फ्राइड चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अल्कोहल से ऑलरेडी आपकी कैलोरीज बढ़ रही हैं, उसके साथ आप डीप फ्राइड पूरा भरपेट तला हुआ स्पाइसी खाना खाएंगे, उससे और आपकी शुगर बढ़ सकती है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू टू इंश्योर कि आप अल्कोहल भी ले और उससे आपको कुछ फर्क भी ना पड़े। हेलो जगदीश बाबू जी, गुड इवनिंग। बहुत दिन बाद आए हैं आज आप सेशन में, कैसे हैं आप? ओके, सो आई सी अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग विल बी इफेक्टिव, आफ्टर फूड वॉकिंग विल बी गुड, विच वन बेटर? Every day exercising, I absolutely do not mind. 24 घंटे में 1 घंटा अपने बॉडी के लिए देना है, बहुत जरूरी है ये समझना। आउट ऑफ द एंटायर 24 आवर्स, 1 आवर फॉर योर बॉडी। हर दिन 1 घंटे एक्सरसाइज कीजिए। कब करनी है आप डिसाइड कीजिए। एक ही बार पूरा 1 घंटा करना है आप पे है, 15-15 मिनट 4 बार करना है आप पे है, आधा आधा घंटा 2 बार करना है आप पे है। सो यू आर द डिसीजन मेकर एंड नॉट मी। डू इट एज पर योर कन्वीनियंस। 1 hour in 24 hours is essential. That's what is my answer to this. All right, that's all for today. It was a great, amazing, lovely coordination with each one of you. We are coming to the end of the year, and I'm very happy and pleased that we together have completed 2 years of webinar journeys in the Wealthy AccuCheck program. Stay tuned. Next year, we are going to have a set of different combinations in sessions, a set of different information, many new people who are going to join in for our webinars: doctors, physiotherapists, dentists, nutritionists, special yoga instructors, a lot of, exercise classes, Zumba, mindfulness initiatives. All of this will be done in the coming year. Stay tuned. अभी आपका प्रोग्राम रिन्यू कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि सेम रेट में आप आगे भी जो आपके बेनिफिट्स हैं वो ले सके। That's all for today's session. Glad to meet each one of you week on week. We will meet again next week with a set of new information, and that will be the last session for webinars for this year. Meanwhile, take care of your health and have a merry and a healthy Christmas.